Assalamu alaikum students. कैसे हैं आप? I do hope that all of you will be having a very good time of your life and you will be focusing on your studies as well. I'm your instructor Muzaffar Saeed and today we are going to further discuss the topic logical deductions. We have already discussed it in the last lecture. Today we are discussing some more scenarios and some more questions. So let's go to the light board and start our lecture. Now students, we are at the light board and as I have just told you, today we are further going to discuss the questions related to logical deductions. Now these questions will be very different from the previous lecture we had. So let's start the question. My purpose is actually to give you as many scenarios as possible so that you may not have any difficulty whatsoever while attempting these questions in your exams. So let's see अब हमारे पास scenario क्या है. Seats on a small plane are assigned to six different passengers, i.e. P, Q, R, S and T. There are total 8 seats in the plane and they are in 4 rows. The rows are numbered 1 to 4 with 2 seats each. Seats must be allocated to the passengers as per following conditions. Now, what are the conditions? Condition 1 is N must sit alone in a row. That a row must be single-handedly assigned to N. The second condition is P must sit in the same row as R. कि P और R को क्या होना चाहिए? They must be in the same row. And at the third place, Q cannot sit in the same row as the row with only
1 passengers are 1 and 3. So here we have the complete scenario that there is a small plane and it has a total of 8 seats and they are arranged in 4 different rows. And we do not have the 8 passengers, we have actually 6 passengers. अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, थोड़ी grouping करनी होगी. And that is why I have chosen this question for you, because it will give you a different experience, it will give you a different sort of a challenge as compared to the previous 2 scenarios we discussed in the last lecture. So, अब हमें करना क्या है, that the passengers are 6 but the rows are 8, though they are not evenly distributed. Last हमने जो 2 scenarios किए थे उन दोनों में the positions and the candidates, they were equally distributed. Like we had 6 balls for 6 cups, and in the second scenario, I'm talking about the last lecture, in the second scenario we had 6 jobs for 6 days. But here the scenario is a bit different. Here we have 8 seats for 6 passengers. Now it feels that it is quite convenient, it is rather easier than the previous question, but no, because here we'll have to follow the grouping. और वो grouping कैसे होगी? N will not share any passenger in his row. कोई बंदा ना उसकी रो में नहीं बैठेगा. Then we have a combination P and R, they must sit in the same row. And then we have a difference, पुपो, ठीक है, Q and S, ये दोनों आपस में नहीं बैठेंगे. You can name any relation. I've just like वो चूँकि चल रहा था social media पे, तो that is why I have named it. Otherwise, like whatever you want to say, you can remember it by any bad experience, I should say. So Q and S, they'll not sit together. ठीक है, लड़ाई हुई है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठने पे तैयार नहीं है. So it means we'll have to arrange at least 1 row for N and 1 row for Q or S. इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा. And the rows with only 1 passenger must be 1 and 3. It means कि 2 or 4 में we can have 2, we can accommodate 2 people, but in 1 and 3 we can only accommodate 1 passenger. So ये total scenario है. अब देखते हैं पहला question इसका क्या आता है. Which of the following passengers could be assigned the same row as Q? And the options we have are now let's talk about the different options. We know N is excluded because N must sit alone in a row. तो वो तो किसी के साथ row share करेगा ही नहीं. Then हम let's talk about P. P must sit in the same row as R. तो P के साथ भी नहीं हो सकता. Why? Because P will already be sitting with R. तो इसको Q के साथ तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, because it is already there with the R, उनका already combination है. Now R और Q,
लेट्स पोस्टपोन इट और पहले ये देखते हैं Q and S. We have clearly mentioned that Q and S cannot sit in the same row. So the option we have is R or T. Now we know that R must sit with P. तो R जो है वो भी Q के साथ नहीं बैठेगा. So the only option we can conclude from this particular discussion that the only option that can sit with Q is actually T. Why? Because बाकी हमने सभी में देख लिया N single रहने, P और R they should sit together, so they will not go with Q, and S or Q they must not sit together. That is why our right option here is option eta, that is the passenger T. Now let's go to the second question of it. और बार बार मैं आपसे कहता हूँ there is no need to panic. These are only the different scenarios. अभी देखा ना कि हम बिल्कुल एक अलग सिनेरियो लग रहा था, बट जब हमने उसको टेस्ट किया अंडर द कंडीशंस वी हैड, तो इट बिकेम वेरी एविडेंट दैट आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ईटा. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हमारी क्या बनती है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलके क्या बनता है. If P and R are sitting in row 2, which of the following must hold true? ठीक है, और must be true, दोनों चीजें आप कर सकते हो. सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन कि P और R जो है अगर रो 2 में है तो फिर इनमें से नीचे कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी. लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर. N is in row 1, beta. Q is in row 1, Charlie. Q is in row 4, Delta. S is in row 3, and eta. T is in row 4. So ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जी. लेट्स सी हम क्या देखते हैं. If P and R sitting in the row 2, just for your understanding, I am writing down the rows so that you may understand in a better and more effective way. Okay, so we are assigning P and R in the row 2. Now N is in row 1, and we know that Q cannot sit in the same row as S. तो Q को हम कहाँ बैठा देंगे? Because we have only row 1 and 3 that can contain one passenger. तो S और T को क्या कर देंगे? They will be at row 4. Now let's discuss this first option. N is in the row 1, but it can be on row 3. बिल्कुल ठीक है. Row 3 में बैठ जाएगा तो तब भी सही है. Q will be shifted here and N can be shifted here. We'll have everything aligned. क्योंकि N के लिए सिर्फ सिंगल रो में बैठना कंपल्सरी है, रो 1 में बैठना कंपल्सरी नहीं है. So it is an option, but it is not a compulsion. बार बार कहता हूँ, try to differentiate between these two.
what is the option and what is a compulsion. So it is an option but not a compulsion. Let's talk about B. Q is in रो 1. देखिए Q रो 3 में भी है तो तब भी हमारे सारे ऑप्शंस क्या हैं, सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं. सो इट इज अगेन एन ऑप्शन. हो तो सकता है, जैसे मैंने भी कहा कि इट कैन बी शिफ्टेड हियर एंड n कैन बी शिफ्टेड हियर. सो इट कैन बी एन ऑप्शन बट इट इज नॉट अ कंपल्शन. क्वेश्चन ऑप्शन सी देखिए, Q इज इन रो 4. इफ वी से सो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, because if Q is placed in row 4 it will have to sit with T and S will be moved here. So मतलब satisfy तो हो जाएगा, but again it is an option because हमने Q को row 3 में row 1 में भी करके देख लिया. It is fulfilling all the conditions. S is in row 3. ठीक है, S is in row 3. अब अगर S को हम यहाँ करते हैं, अगेन इट इज जस्ट एन ऑप्शन, इट इज नॉट अ कंपल्शन. S यहाँ पर भी है तो क्या है, अपनी हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो रही हैं. एंड देन फाइनली T इज इन रो 4. दैट इज अ कंपल्शन. व्हाई? बिकॉज इफ वी शिफ्ट T here, we know that in row 3 we can only have one passenger, so we'll have to move Q from here. तो हमें Q कहाँ लाना पड़ेगा, S के साथ, and that is not possible. Okay, if we move T with N, ठीक है, तो N यहाँ पर नहीं आ सकता. Why? Because N has to sit alone. If we move P and R, it cannot be moved because that is the prerequisite. इनको क्या होना चाहिए, इनको रो 2 में ही होना चाहिए. अगर हम कोई भी और अरेंजमेंट करेंगे तो our options will not hold true, our conditions will not be satisfied. That is why our correct option in this MCQ is option eta. This has to be true, otherwise these conditions will not be fulfilled. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स से बता भी दिया कि किस तरह से आप इसको काउंटर चेक कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस ऑप्शन इज अ मस्ट और एन ऑप्शन. सो अब कुछ और इसी के सिनेरियोज करते हैं एंड लेट्स सी कि व्हाट वी गेट फ्रॉम दीज डिफरेंट क्वेश्चंस. सो जी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सिनेरियो एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या है जी. The third one is how many passengers are eligible to sit in the same row as T. Now that is a very tricky question. Let's see our options first. And the options are 1, 2, 3, 4 and 5. Why this question is tricky? Because apparently you will feel that the answer is alpha 1. Because आपको लग रहा होगा कि because there are only 2 seats in a row and one is already occupied by T. So understood है कि उसके साथ कितने लोग हैं जो बैठ सकते हैं, एक ही. But here we are not talking about the capacity. We are talking about the eligibility. कितने combinations बन सकते हैं T के साथ? This is what the question is all about. Be very careful while reading a question. Remember, we are not talking about the number. We are talking about eligibility.
अब वो एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए, if we talk about say row 1, row 2, row 3 and row 4. अब रो 1 में हमने भी लास्ट में किया कि क्या होना चाहिए, n, यहाँ क्या होना चाहिए, p and r, यहाँ हमने क्या किया था, q, और यहाँ हमने किया था s और t. If you go through this particular scenario, s can sit with t and q can also sit with t. So eligibility कितनी होगी, 2 लोगों की. Okay, is there an option कि हम क्या करें, p और r को वहाँ करने की बजाय मैं कर दूं p and s और इसको इधर ले आऊं r and t. Is it possible? No, it is not possible. Why? Because P must sit in the same row as R. तो P और R में से तो T के साथ कोई नहीं बैठ सकता, N B T के साथ नहीं बैठ सकता, because we know that N must sit alone. So the only partners or the only passengers T can have with it is either Q or S. Because तीसरा तो वो खुद है ना, P R उसके साथ बैठेंगे ही नहीं, वो उन्होंने एक साथ बैठना है, N ने अकेले बैठना है. So S और Q ही उसके साथ बैठ सकते हैं. So it can be either S or Q, but because both of them are eligible, that is why our right option will not be alpha. Our right option will be beta. So that is why I keep on saying, especially while talking about these types of questions, that be very conscious while you are actually reading the question. Here we were not talking about the number of people. We were talking about the passengers who were eligible actually to be with T. और उसके लिए हमने देख लिया कि P और R की eligibility इसलिए नहीं बन रही because they must sit with each other, और N must sit alone. तो N और P R दोनों निकल जाएंगे. तो रिमेनिंग 3 में से ऑब्वियसली एक तो T खुद है, तो बाकी सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे जो कि एलिजिबल हैं टू बी विद T इन द सेम रो. लेट्स मूव ऑन टू अनदर सिनेरियो. If Q and T are assigned in the same row, which of the passengers could be assigned to sit in row 3? And the options we have are P, Q, R, S and T. Now if Q and T are assigned to sit in the same row, तो Q और T जो है वो तो क्या हुए, automatically they must be excluded. इनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता. Then we know that P and R they must be sitting together. इनको भी क्या करना है, इनको भी साथ ही बैठना है. And we know that in row number 1 and 3 we can only accommodate one passenger. So it means P or R, they are not eligible
to be in row 3. So that is why, without any doubt, our correct option will be option delta, that is S. S will be assigned to sit in the third row because we know that in third row we can only accommodate one passenger, and if we go for P or R, they will go in pair. That is why they are not eligible to sit in row 3. So you have seen that the question which looked initially a very different, a very difficult sort of a question, it can be solved very easily using a bit of presence of mind and simply following the 3 or 4 instructions we have. अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे, क्लोजली फॉलो करते रहेंगे, तो देयर विल बी नो क्वेश्चन एट ऑल कि आप इन क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट ना कर सकें. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिनारियो पे एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर डिस्कशन. ले स्टूडेंट्स, हम एक और सिनारियो डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट type of questions we have in this particular scenario, and the statement is six automated tasks numbering 1 to 6 are to be completed. Each task needs 1 hour to be completed. If two tasks are completed in such a way that no time elapses between the completion of and beginning of the next task, what should be the minimum time to complete the task conforming following conditions. And now the conditions are: number 1,
task 1 should be completed before task 2 can be begun. The second condition is task 3 should be completed before task or before 4 could be begun. And the third one is not more than one task can be completed at a time except task 4 and 5 can be completed concurrently. सो ये हमारे पास कंडीशंस हैं जी. आपने देख लिया कि 6 ऑटोमेटेड टास्क हैं. एक टास्क को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है. और टास्क इस तरह से कंप्लीट होने चाहिए कि एक टास्क के ख़त्म होने में और दूसरे टास्क के स्टार्ट होने में देयर मस्ट नॉट बी एनी गैप, मस्ट नॉट बी एनी टाइम elapsed. तो ये भी देखना है हमने. और हमें चाहिए मिनिमम टाइम चाहिए, बट मिनिमम टाइम के लिए हमें कुछ सर्टेन कंडीशंस फॉलो करनी होंगी. एंड दैट इज द टास्क 1 शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टास्क कैन बी बेगन. एक तो ये करनी है. देन टास्क 3 शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टास्क 4 कुड बी बेगन. तो टास्क 3 को आप पहले करेंगे और 4 को बाद में करेंगे. एंड देन लास्टली इम्पॉर्टेंट है ये कि कोई भी टास्क जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा नहीं हो सकता एक्सेप्ट 4 and 5. 4 and 5 को जो है वो आप कॉन्करेंटली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं कि इसमें हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. एंड द क्वेश्चन इज which of the following could be the second task formed? And the options we have is 2, 3, 4, 5 and eta 6. Now we all know कि इसको हम इन्हीं 3 कंडीशंस पे पटन करेंगे. सो मैं यहाँ आपके लिए जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये हमारे पास hours हैं. Now we can only perform option, we can only perform the second task, or I should say the second task will be the task that will be performed at the second place. क्यों? Because one should be performed before
2। तो हर हाल में जो टास्क 1 है उसको तो क्या आना चाहिए यहाँ। अगर हम उसको यहाँ भी लेके जाते हैं तो फिर 3 और 4 ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी वायलेटेड। और 3 और 4 को क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 3 and 4 should be performed according to the second condition, that 3 should be performed before the 4th task could be begun। तो ये आ जाएगा। तो और एंड पे तो फिर हमारे पास क्या बचेंगे, 5 और। अब अगर इसको हम यहाँ लेके आते हैं तो हमारी फर्स्ट 2 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, दे विल बी वायलेटेड। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी, दैट इज ऑब्वियसली आवर option alpha, that the second task should be performed at the second place. Now moving on to the next question. The shortest possible time in which the group of 6 tasks can be performed is beta, Charlie, delta, and then we have eta. It is 4, 5, 6, 7 and 2. Apparently, you may feel that the right answer is option Charlie, 6, because 6 टास्क हैं और 6 ही घंटे हैं। But remember, we have been asked to tell the shortest possible time. अब shortest possible time की जब हम बात करेंगे तो हमने कहा कि no more than 1 task can be completed at a time। ये तो हो गया, लेकिन साथ हमने क्या किया कि 4 and 5 can be completed concurrently। इनको हम at the same time कर सकते हैं। तो पहले हम 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 4, 5 को हम क्या करेंगे, 1 घंटे में इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम will move to our task 6। So अगर हम इनको करेंगे तो 1, 2, 3 and then 4 and 5। So the right option for us will not be option Charlie. The right option for us in this MCQ will be option beta। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, presence of mind आपने शो करनी है, and the things will get lot easier। And one more thing, specifically in these types of questions, जो आई कैचर्स है ना उनको बहुत अवॉइड करना है आपने। You know what do we mean by eye catchers? Eye catchers are the options which seem true, which allure you a lot, attract बहुत करती हैं, बड़ी simple, convenient लगती हैं, but actually they are not। कोई ना कोई एक आध ऐसा word उसमें होता है। Suppose अगर यहाँ पर shortest possible ना होता, सिर्फ टाइम होता, तो फिर क्या होता, 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल थी, क्योंकि 6 टास्क है तो 1 घंटे में 1 टास्क होना है। तो अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मेंशन ना हो तो वी कैन गो फॉर ईदर 5 और 6, बट नाउ वी हैव बीन क्लियरली टोल्ड दैट वी नीड टू टेल द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज नॉट 6 आवर्स, दैट इज ऑब्वियसली 5 आवर्स। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी सिनेरियो से रिलेटेड। Which of the following cannot be true of any acceptable ordering of tasks?
कि कौन सी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. एंड द ऑप्शंस वी हैव task 1 is completed before 2, beta task 3 is completed before 4, Charlie task 4 is performed before 6, Delta five is performed before 3, and eta is six is performed after 3. Now here we need to see the basic conditions. वो क्या हैं? अगर हम पहली ए को देखते हैं तो 1 is completed before 2, ये तो हमारी पहली कंडीशन है. So how can we say that it cannot be true? It has to be true. इसको हर हाल में क्या होना है? इसको तो true prove होना ही है. Then task 3 is completed before task 4. It has to be true. And here we have been asked to point out what cannot be true. तो ये तो दो बिल्कुल opposite चीज़ें हैं. Task 3 is completed before, task 4 is completed before 6. This is true. We have seen that task 4 is completed before task 6. So it is obvious. 5 is performed before 3. अब 5 को अगर हम इधर ले आते हैं तो फिर हमारे लिए क्या होगा? This cannot be held true. It is not possible for us कि हम 5 को क्या करें? 3 से पहले परफॉर्म करें. Because if we do so, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Because 3 को फिर हमें कहाँ लाना पड़ेगा? We'll have to move it to 6. ठीक है. अब एक क्वेश्चन we'll have to move it to 5. एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है उसमें कि सर ये भी तो हो सकता है कि हम जो है वो 5 और 6 को यहाँ ले आएं और 3 और 4 को इधर ले जाएं, तो फिर भी प्रॉब्लम ही रहेगी. ठीक है. बिकॉज फिर हम इन कंडीशंस को किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे ना. ये देखें 5 इज परफॉर्म बिफोर 3. हम अगर 5 6 को यहाँ ले आएं और इनको इधर ले जाएं 3 और 4 को, तो फिर हमारा वो जो था कि नंबरिंग 1 to 6 इसको एक सीक्वेंस में होना चाहिए, वो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिस्टर्ब्ड. तो 5 कैनॉट बी परफॉर्म बिफोर 3. सो आवर राइट ऑप्शन इन दिस MCQ विल बी ऑप्शन डेल्टा. सो अब हम देखते हैं एक और सिनेरियो एंड लेट्स सी कि उसमें हमारी एग्जांपल्स और MCQs क्या हैं. Students, we are here with another example, and this time our statement is two male singers P and S two female singers R and V, two male comedians T and W
and 2 female comedians, Q and U, are the 8 performers in a certain concert. Each of the performers has to perform alone and only once. The performers may perform in any order that fulfills the following conditions. अब वो conditions क्या हैं, आए देखते हैं. The performances of the singers and comedians must alternate throughout the concert. That is the first condition. Second is the first performance of the evening must be by a female performer, and the second must be by a male performer. The final performance of the evening must be by a male singer. So ये हमारी स्टेटमेंट है कि 2 मेल सिंगर हैं और 2 फीमेल सिंगर्स हैं, and then we have 2 male comedians and 2 female comedians. So in all we have 8 performers on that night, and each of the performances has to perform alone. अकेले अकेले परफॉर्म करने और एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. और कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? द परफॉर्मेंसेस ऑफ द सिंगर्स एंड कॉमेडियन मस्ट ऑल्टरनेट, कि अगर एक परफॉर्मेंस कॉमेडियन की है तो दूसरी किसकी होनी चाहिए? इट मस्ट बी फ्रॉम अ
it must be of a singer. Then secondly, the first performance of the evening should be by a female performer and the second must be by a male performer. याद रखें, it's not about singers or comedians, it is only about the gender. And the third and final thing about that question is, or the third condition is, the final performance of the evening must be by a male singer. ठीक है, तो ये इसकी टोटल जो है वो कंडीशंस हैं. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव. Which of the following could be the last performer of the evening? A, B, C, D, E. Let's see. Now we have the options कि इनमें से performer, last performer कौन होगा. We know that the last performer should be a male singer. So इनमें से हमने देखना है कि male singer कौन सा है. If we talk about R is a female singer, so ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. If we talk about let's see T, तो T क्या है हमारे पास? T and W. T is a male comedian, so this cannot be the case. If we talk about V, V is a female singer. V cannot be the case. And if we talk about W, here, W is a male comedian. So W cannot be the right option. S को देखते हैं. What is S? S is a male singer. So out of these, only S can possibly be the last performer of the concert. Why? Because it is the only male singer we have in that question. Next question देखते हैं. Which of the following could be the first performer of the concert? P, R, U, V, and at last we have W. Now let's go back to the conditions and check which of the following could be the first performer. A first performer क्या होना चाहिए था? Must be a female performer. It must be a female performer. Got it? So it is not necessary कि ये मेल हो, ये सॉरी सिंगर हो या कॉमेडियन हो. बट लास्ट देखें, लास्ट इज अ सिंगर. सो इफ वी हैव लाइक इट इज अ सिंगर. अब मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ. वी नो दैट दे मस्ट परफॉर्म और ऑल्टरनेट बेसिस ना. तो सिंगर, तो यहाँ क्या होगा?
कॉमेडियन, फिर सिंगर तो यहाँ क्या होगा, कॉमेडियन, फिर सिंगर तो यहाँ क्या होगा, कॉमेडियन, एंड देन अगेन सिंगर और फिर क्या होगा, कॉमेडियन। और ये क्या था हमारा, मेल, और ये क्या होगी, इट मस्ट बी अ फीमेल और एनीथिंग। बट हमें ये चाहिए, ऑल्टरनेट चाहिए, पहले कॉमेडियन और फिर उसके साथ सिंगर। और ये भी हमें पता है कि फर्स्ट परफॉर्मर क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ फीमेल। तो यहाँ पर हमें चाहिए कॉमेडियन, और कॉमेडियन कौन सा चाहिए, इट्स नॉट द मेल कॉमेडियन, वी नीड अ फीमेल कॉमेडियन। तो फीमेल कॉमेडियन देखें कौन से हैं हमारे पास, लेट्स टॉक अबाउट पी। पी इज अ मेल सिंगर, सो पी को हम क्या करेंगे, वी शुड ऑब्वियसली exclude it. Let's talk about R. R is a female singer. We need a female comedian. So this option will also be crossed. Let's talk about U. What is U? Two female comedians, Q and U. So U can be considered. Let's check. बाकी देख लेते पहले. What about V? Here, that is actually a female singer, so delta भी क्या हो जाएगी, cross. And what about W? W is a male comedian, that is why this option will also be crossed. So right option is option Charlie, because it had to end in a male singer, ठीक है, और इन्हें ऑल्टरनेट बेसिस पे परफॉर्म करना था। पहले क्या होना था, इट मस्ट बी अ फीमेल, सॉरी अ कॉमेडियन, देन सिंगर, देन कॉमेडियन, फिर सिंगर, फिर कॉमेडियन, फिर सिंगर, और फिर कॉमेडियन और फिर सिंगर। सो एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज वी नीड द फर्स्ट परफॉर्मर टू बी द फीमेल परफॉर्मर, सो वी नीड हियर अ फीमेल So you have seen that we do not need to do anything extraordinary. हमें क्या करना है, हमें obviously थोड़ी सी presence of mind और इन conditions को समझ के इनको implement करके हमें वो सारे answers अपने find out कर लेने। उम्मीद है कि इतने सारे different scenarios के बाद आपको logical deductions का portion जो है वो बहुत अच्छे से clear हो गया होगा। Ladies and students, that is it for today. I do hope that all of you would have understood what was taught to you. These questions are a bit tricky, but as you have seen in the 2 lectures we had, these questions can be solved very easily if you show a bit of presence of mind and try to fulfill all the conditions. But in case you have any question, any query, do talk to me, use this comment box and ask as much questions as you want. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।